I hope we are live. Um, Hi guys, if you can see us and hear us, please let us know in the chat box. Meanwhile, I'll introduce Nitish. Just let us know if you can hear us and see us in the chat box, right? Okay, we are live. Okay, so first of all, let me give a background for Nitish and let me tell you about his academic background, his work experience background, and उसने कौन से exams दिए हैं and the agenda of today's session. So Nitish comes from the hospitality background. He did his BSc in hospitality and hotel administration. And work wise, he's been a chef for 3 months, and उसके बाद he's been a facility manager. That's right, Nitish. Yeah. And IIFT एग्जाम में 99.7 परसेंटाइल स्कोर करने के अलावा he has also taken multiple other exams, and I'm going to share their names as well as their scores with you so that you get an idea. So he scored 252 in the NMAT exam. He scored 96.91 percentile in the CAT exam, 94.5 percentile in the XAT exam, and 97.9 percentile in the SNAP exam. So welcome Nitish to the channel, and I'm truly grateful to you because आज finally हम IIFT की पूरी discussion कर सकते हैं because मैंने CAT के अलावा कोई exam नहीं दिया है and you have taken almost every other exam. So thank you for doing this. Thank you so much for introducing me in such a kind way, and thank you for providing me the platform and the opportunity to help people and spread awareness about the FT exam and how it is very beneficial to give the IFT exam and how like to learn about it. So thank you so much, Shweta. I would firstly like to start off with the fact that बहुत सारे स्टूडेंट्स कैट एग्जाम की तैयारी डिलीजेंटली कर रहे होंगे बिकॉज इट्स द मेन एग्जाम फॉर एमबीए, लेकिन बहुत सारे अदर एग्जाम्स हैं जैसे कि आपने भी दिए हैं. सो व्हेन एग्जैक्टली डू पीपल रियलाइज कि हमें बाकी एग्जाम्स भी देने चाहिए, और लेट्स से व्हेन डिड यू डिसाइड कि मुझे आईआईएफटी का एग्जाम स्पेसिफिकली लिखना है, स्पेशली बिकॉज आईआईएफटी का एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत कम है. बहुत सारे बच्चे देते हैं लेकिन ऑलमोस्ट अराउंड 450 के अराउंड ही सीट्स हैं. So how did you decide and when did you decide to write all these multiple exams? So I started my CAT prep in like early June, right? So my मेरा goal हमेशा से यही था MBA के लिए कि मैं CAT ही दूंगा, and everyone who starts for this MBA prep, they all know about the CAT exam, right? So because in my house there are multiple people and multiple people who have done their MBA. So there was a lot of guidance for me from my brothers that have done their MBA from like ISB Hyderabad or SP Jain. They told me like, hey, you should register for all these exams. तुम सब सारे exams के लिए fees भर दो और सबके लिए register कर दो. Or you can start preparing for those exams later after CAT because the syllabus for all of these is not that different. Even though ZAT and IFT are a little bit different and NMAT has some extra critical reasoning. बट बाकी जो पोर्शन है वो इतना ज्यादा अलग नहीं होता है बाकी सारे एग्जाम से कैट के लिए. तो उन्होंने बोला था कि आप इसकी रजिस्टर कर दो एंड यू रजिस्टर फॉर दीज एग्जाम स्नैप एंड मैट आईएफटी जैट and all these exams just to have as an option. Things can always go wrong. So I know a few people who have got into accidents on their CAT day. They were going to Correct. give the CAT exam and they've got into an accident, or they couldn't reach the venue in time or something like that, right? So कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसके लिए like you have to have a backup plan. So you should register for these exams. So my brother told me to आप सबके फॉर्म भर दो नितिश, एंड देन मैंने सबके फॉर्म भरे एंड आई वाज रेडी टू गिव ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स. बट माय मेन फोकस वाज कैट. सो आई नेवर लुक्ड एट दीज एग्जाम्स और देयर पोर्शंस और एनीथिंग बिफोर द कैट एग्जाम. मैंने Okay. सिर्फ कैट की तैयारी की. मैंने सिर्फ कैट के लिए क्वांट पढ़ा, कैट के लिए एलआरडीआई पढ़ा, कैट के लिए वीआरसी पढ़ा, और इन सब के लिए मैंने कैट के एग्जाम के बाद चालू की तैयारी. और फिर ये सारे इन सब का मैंने पोर्शन देखा, इन सब का पेपर पैटर्न देखा, कैसे क्या पूछते हैं, एंड देन इसकी तैयारी चालू की. So you said कि you started your preparation for CAT in June. So Yes. November में एग्जाम होता है. You are talking about June of the same year or of the previous year? June of the same year, yes. So you prepared for the exam in less than 5 months. Yes. Did you have any And prior experience of these I didn't exams? have any prior experience, but I did give the NCHM JEE, which Okay. happens for the IHM Pusa, where I did my hospitality. And I Hmm. secured the AIR 39 there. So there was a Okay. lot of information that I already had, and some of the quant questions and some of the quant portion is very similar to that.
So I had some earlier experience, even though that was like 5 years ago before this. But I did have some experience, and I've generally been a good academically inclined kid, even though my marks in 10th and 12th were not that great. But because I wanted to pursue different things back then, I didn't know that, MBA has these weightages of 10th, 12th exams. So there was, so yeah, Got I mean, I did prepare for it in 5 months, and but I did my best in those 5 months. गॉट इट सो अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद आईआईएफटी और कैट का डिफरेंस नहीं मालूम होगा सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर कैट के बारे में आई एम श्योर मेनी ऑफ देम विल ऑलरेडी हैव एन आइडिया सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैट एंड आईआईएफटी इन टर्म्स ऑफ पैटर्न the different sections that are there and also the difficulty level. Sure. So I have these notes that I prepared so I don't miss anything about the information about IIFT. So first of all, IIFT is taken by almost 30K people. 30K people register for the exams, and usme se 27,000 people actually give the exam. So there's a 10% dropout rate from registration to actually appearing candidates, right? Okay. And I think the quant in IIFT is very lengthy and it's very calculation intensive. So you have to, like, there are numbers that you have to divide with like prime numbers, right? So the division with 13s and 17s is very difficult because the Okay. numbers are not that pretty and they don't cancel off. So the calculations in IIFT exams in the quant section gets very long and very lengthy, right? Okay. So that's one of those time sink traps that people get into the IIFT exam. So Hmm. quant and LRDA is not the scoring section for IIFT exam, which is Okay. a very huge point that a lot of people miss, because these are very heavily calculation intensive tasks that might be easy for those engineering background people, but Hmm. people coming from non-engineering backgrounds should focus on the VRC section, because VRC section is very easy compared to CAT, because it's more of how fast you can read and how fast you can you know like get these things that the RC is saying, because the RCs are like over 1,000 words RCs, right? And the cat has like 500 word RCs. So RCs are very long, but they're very easy to understand. And there's no hidden messages. There's no hidden, meanings, and no, what the author wants to convey and stuff like that. But it's Okay. very straightforward. But you need a lot of reading speed and a lot Hmm. of retention, because the IFT interface, you need to scroll sideways and up and down for those RCs a lot. Okay. So you need to Okay. remember what the point was where in the RC, Got right? it. So when you read the question, you need to go back instantly to that RC, to that place, to recall the answer of the RC of the question, Got right? it. So I think the paper pattern is not that I think I know. The paper pattern is 2 hours and there are no section locks. So there's 25 questions in quant, there's 30 questions in LRDI, and there's 35 questions in VRC, right? And these Hmm. are all their marking scheme is +3 and -1. +3 for getting the question right and -1 for getting it wrong. And there's also a general awareness section which has 20 questions. And the Okay. marking scheme for that is +1.5 for the right question and -0.5 for the wrong questions. Hmm. So the most important thing that people get out of the shortlist is they don't clear the sectionals for all these categories, right? So the sectionals for GK is around 4 and 4.5. So this year it was, they don't release the actual number, they release the percentile. So you have to be in top 40 percentile. But Okay. I'm just estimating on what I have seen this year. So it's Hmm. around 4 and 4.5. And for quants, LRD, and VRC, it's the same 40 percentile. But the cutoff is slightly different for quant and LRDI because it's lower because of the difficulty of the quant and LRDI section. Got it. And Hmm. the calculation is very long, so you have to make your strategy around that, so you don't pick the long questions. You pick the easy ones that are sitters, as the sitter questions, and you can easily do them quickly and get move on to the VRC section. It is the most scoring section in my opinion, and it is where Okay. I scored 77 marks out of my 133 marks in IFT. And Okay. my VRC percentile was 99.94 in VRC in Okay. IFT. I think it is the most scoring section of IFT, and I think more people should focus on the VRC part. And the And VRC part, because you yes, mentioned that the cutoff is lower in quant and LRDI, it also makes yes, sense to focus more on VRC in that case because yes, the cutoff exactly. might be higher The in that. sectional for VRC goes a lot higher. It goes to around 30 marks.
Got it. Whereas for quants and LRDI, it goes around 11 and 12, and for LRDI, it goes around 15 and 18. Hmm. So I think VRC is should be the focus for the IFT exam. But there's a lot of different questions that VRC has in IFT exam because there's a lot of vocab questions. So usually Okay. I never read any vocab books for the CAT exam because I Hmm. never needed vocab books, and I don't think vocabs is very necessary for the CAT exam. You actually have to understand what the passage says and not any word specifically. So Correct. vocab was never a priority for me for the CAT exam, but for VRC in IFT, it is very much a priority because there's 6 or 7 questions for vocab directly from etymology and the meanings of words and stuff like this. That is very important and it's free marks basically. So it'll take you like hardly 5 seconds to solve that question and you get those 3 marks just if you study the vocab on a consistent daily basis. If your vocab is weak, from like Normal Lewis or Word Per Made Easy or some books like that, Okay. right? There's also the GK section, which is the wild card of the IFT exam because you have to know everything that has happened that year. But especially there are some favorite topics for IFT that they like, right? So there Okay. are like currency questions. So for example, what is the currency of Thailand? What is the currency of Netherlands? Questions like this. There's also the CEO parts which they like. So which who is the CEO of World Bank? Who is the CEO of Bharti Airtel or something like that? So they like CEOs. They like books and authors. So they ask you, who wrote this book, or they'll give you 4 options of the books and they'll give you 4 options for the authors, and you have to match the following. So these are very popular questions. There's also headquarters questions. So there were 2 headquarters questions this year. And I actually remember my brother like helping me memorize them while standing up, like, outside the IFT exam center. So we were mugging up, this UN is based here, Hmm. this OPSEC is Okay. based here. So these headquarters of the United Nations and these World Banks and IMF. So stuff like this is very important. And there were 2 questions that came this year just on them, these headquarters. So it is very important to learn all the headquarters. And there's some resources that I have collected for these GKs where I studied from. Yeah, we'll So come to that part. yeah, sure. Okay, so the next question that I have, and guys, if you have any questions, you can put them down in the comments and we'll like in the chat box and we'll take them up. So another question I have is कि जब कैट एग्जाम खत्म होता है उसके विद इन 30 डेज ही मोस्टली ऐसा देखा गया है कि आईआईएफटी का एग्जाम होता है आईआईएफटी का एग्जाम होता है थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में कैट का एग्जाम लास्ट संडे को होता है Last one. नवंबर में सो बहुत ही कम टाइम बचा होता है उस टाइम तक एंड यू मेंशन 3 सेक्शंस काफी सिमिलर हैं वीआरसी में वो कैब का पार्ट एक्स्ट्रा है और एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन एक्स्ट्रा है सो राइट नाउ द क्वेश्चन दैट आई हैव इज when do you start preparing for IIFT? Is it after the CAT exam or is it before the CAT exam? And second question is, can you self study for it or do you need to take those crash courses or coaching after the CAT exam? Okay, makes sense. So my issue was very different because the CAT was on 27th November this year. Hmm. My NMAT was on 6th December. So it was just like 6 days or 7 days after the CAT exam. So I was preparing for NMAT for at that point of moment because I wanted to score a good percentile and good marks in NMAT because I really wanted to crack all the exams to have more options to join colleges. So I studied for NMAT till 6th December, and then I had my snap on 10th December, I think 10th or 12th. So I studied for snap exam for those 4 days, and for one week I studied for IFT exam before 18th December. So IFT was on 18th December. So from 10th to 18th I studied for IFT. I gave around 3 or 4 mocks, and I studied all the past years question papers which are available or for free on the internet. And that's when I studied for IFT, and I didn't self-study, but I think it is very possible to self-study for the IFT exam. I did take a Kraku course for IFT from their site, and yeah, and I took it for the mocks as well because IFT mocks are different from the CAT mocks because there's no section locks, right? So you can move around the sections and you can prepare different strategies for what your strengths are and what how much you've prepared each section for. Hmm. So that's what I did for the IFT exam. And I think all the resources that are necessary for the IFT exams to study are available for free on the internet and YouTube. For the GK section, there's some great content available. There's a Baiju teacher who is Salik Ahmed, and he takes these
GK sessions just after the CAT ends for all these exams, for ZAT, for IFT. So he teaches GK and he takes these GK session and he revises all the events that have happened this year. And actually, 6 questions from his videos appeared in the IFT exam directly. Oh, that's So amazing. out of This 26 is questions, sorry, this is available on YouTube or yes, on YouTube for okay, free. so this is freely available. Okay, that's Yeah, yeah. amazing. Hmm. So out of 20 questions, 6 questions of it were directly from his videos. So I was very happy to, watch those and score those free marks for the GK section, which helped me clear the cutoff as well. So yeah, that's about it. I think studying for IFT before CAT doesn't make any sense because CAT has more options and more colleges accept the CAT score, and IFT is just for one college for just IFT, right? So studying after the CAT exam for IFT is, I think, makes the most sense if you don't have the NMAT or SNAP before that. Also, this year I think IFT exam clashed with SNAP 2, so which is why I missed SNAP 2 as well. I gave SNAP 1 and 3, but I missed SNAP 2 because it was on the same date. Okay. So yeah, So now that we've covered the fact that after the CAT exam you prepare for IIFT, now I would request you to walk us through each section, how you prepared for them and the resources you used for them. And because you said that the main coaching you took was for the CAT exam, if you could let us know which teachers you followed for each of these sections or which sure, books you use, any material that you would recommend them for each of the sections along with the preparation strategy. sure. So for quants, I followed Raman Tiwari sir from Unacademy. So I had an Unacademy subscription, and I followed in my early days of preparation in June. I went around and studied from every teacher I could find for quants. So I studied from Ravi Prakash sir, I studied from Udit Saini sir, I studied from Lokesh Agarwal sir. So all of these I went to, and I wanted to find the perfect teacher to study from before I started studying. So who would teach me the best and who would I would learn from the best. So I think this is a lot of a lot of people make this mistake because they stick to one teacher even they don't get it or they don't improve upon, but they stick to that one teacher blaming themselves instead of someone else. So they think that I'm not working hard enough, or maybe they just don't realize that the compatibility isn't there with the teacher, and you maybe don't understand the concept that they are teaching, or in a way that they're teaching, because every teacher has the different style, right? So I Correct. found a style that suited me, and that was Raman sir. So I followed him for around 3 months until the end, and he hosted these revision sections on YouTube for free, Okay. like 12 or 13 days before CAT. So for all the time and work and all these quant subjects. For LRDI, I for LRDI I followed Pranav Pant sir. So he's the only guy that I found on the internet that has scored 100 percentile in LRDI section in CAT 4 times. He was the only one experienced enough for me to teach LRDI that I found, because he cracked LRDI 100 percentile, which is very insane to me. He solved all the 4 sets, got all the questions right, got 60 out of 60 in LRDI 3 times in CAT. So I think he was very qualified to teach LRDI. And he has this YouTube channel called MBA Karo, Hmm. where he posted all these tips. And he has also this Telegram group where he teaches. And there's a channel he has made called Aptitude Jab, Hmm. where he has uploaded around 340 sets of LRDI. Like his every video is just a set. He gives you the set and you solve the set, and he also gives you the explanation later. This So is I the did YouTube all of those. channel. Yes, Aptitude Okay. Jab. Yeah. Hmm. All it has is just LRDI sets, nothing else. So it has I solved all of these sets for LRDI, and I think it has been the best resource for LRDI for me for practice, because his explanations are way simpler than any other that I found. uh, there's also one other teacher that is worth mentioning here, which is Gaurav. I think Gaurav Sharma sir from Elite's Grade. I Hmm. think he's also one of the best for LRDI. So these two are the teachers that I think are the best for LRDI, and no one even comes close to them in the way that they teach and the simplistic approach that you need to have for LRDI sets. So for it's very they go into very detailed analysis. For example, someone may teach you, hey, draw this table, and you fill this, and you deduct some things for the matrix. But Gaurav sir takes it a step further, and he optimizes the way to draw the table as well. So he's like, Hmm. hey, instead of this way to draw the table, you can draw it this way and arrange it this way.
so it makes deducting them easier. Mm. So So it those goes one tricks that you need. yeah, those tricks really help you to optimize your time and how to draw the tables efficiently and how to solve each set effectively in the shortest amount of time. Got it. Perfect. So for VRC, I did follow Lokesh sir. He's on Academy as well, and I followed his critical reasoning techniques, and I followed his RC techniques as well, which helped me a lot. And I was always very strong in VRC, so I didn't really take that many VRC classes. But yeah, that's who I like, and I think he's pretty great, and he doesn't, uh, he doesn't. Uh, how do I say this? He doesn't like do this, like sugar coating of things, and he's very straightforward with his students, and I like that nature. So it is, I think it should it really helped me a lot. And that in his classes you don't waste a lot of time, just sugar coating things for people, and he's very straightforward with his answers. That's basically the Makes thing I sense. like. So yeah, and these resources are available on an academy as well. And there are some free resources for the GK, as I said. There's the Baiju exam prep for MBA. There's Salik Ahmed sir who takes these GK sessions, and also Pranav sir, the LRDI sir that I mentioned. He also took GK sessions before this IFT exam for IFT specifically, because there were people requesting him in Telegram to take those GK sessions, and he took and he took these GK sessions. He was also the IFT topper last year. He was ranked 2 in IFT, Okay. and he also scored I think 290 in NMAT, which is the highest I've ever seen. So So I think he's a these IIFT GK sections by Pranav sir are also on his YouTube channel? yes, on MBA Okay. Karo, yes, for free. Okay. Got it. So are these all the resources that you use for the different sections? Yes, I also used your formula book that I have right here, the golden formula book, which I remade for myself. I Okay. wrote down everything again in my notebook, and I because I hope it liked the helped. way it was arranged, and I liked all the tricks that you highlighted. So I think it was very good to have a notebook with notes, filled with notes, so you can refer anytime. So whenever you don't get a question, you can go back to your notes and see if there's something you already know and you can't remember, or there's just a completely new question or a completely new concept. So I think maintaining a notes book is very important. Okay. So Any tips that you have for preparation strategy for any of these sections? for any of these sections, I Yeah, think other than the points that you mentioned initially that there are certain differences, other than these resources, there are any tips that you would like to mention for any of these sections? so. I think for quants, the trick I used was just to solve as many questions as possible, right? Because you need that speed and you need that confidence. I have seen people who know everything before the exam, and as soon as you give them a question to solve, they won't be able to solve even the simplest questions. So I have watched this happen with my friends when they were giving mocks. Before the mocks, they would learn everything and they would know everything. You give them a question, they would solve it no problem. But as soon as they get into the mocks, they get sort of a mental block which doesn't allow them to think at that moment. So I think this practice of giving mocks and solving these questions is very important. And to build a habit for sitting for 2 hours, concentrating on the exam is very important, because these days with these Instagram scrolling and these social media platforms, attention span has suffered a lot for the mankind, right? So you need to build these 2 hours of complete focus to write the exam, so that you don't get tired or you don't get sleepy or you don't get distracted for those 2 hours. So to build this habit, I think is really necessary to give a lot of mocks. And I even suggest giving 3 hour mocks, which I gave for the cat, even though the pattern is 2 hours. But if you have the habit of sitting 3 hours, you won't get tired in the 2 hours. So after this is a very common occurrence after the LRDA section for cat. After those 40 minutes, everyone is exhausted, right? Correct. Because they've just gone through the LRDA torture, and now they have to attempt the quant section, right? So everyone is tired and they're like sick of giving the test. And the quant section always suffers because people are mentally drained from the LRDA and the VRC section. So to keep that stamina and the perseverance, like
तुम्हें लाइक वहां तक पहुंचने के लिए जो स्टेमिना चाहिए और वो स्टेमिना और लाइक जोश रहना चाहिए, वो रहता नहीं है लोगों में। हम्म। तो वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जब तक क्वांट वाले सेक्शन पे पहुंचो तो तुम्हारे में वो सेम जोश रहे जो वो वीआरसी सेक्शन में था जब तुमने एक पेपर चालू किया था। तो वो डिमिनिश ना हो, तो उसके लिए लाइक वो 2 घंटे बैठने की जो वो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो तुम्हें बहुत सारे मॉक देने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे बैठ के, लाइक तुम्हें ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं 3 घंटे बैठ के मैं 100 क्वेश्चन करूंगा क्वांट के। और फिर तुम्हें उठना नहीं है, ना तुम्हें पानी पीना है, ना तुम्हें लाइक कोई मोबाइल देखना है, तुम्हें बस चुपचाप वो क्वेश्चन करना है। प्यास लगे तो पानी पी सकते हो, बट लाइक और कुछ नहीं करना है, नो डिस्ट्रैक्शंस, दीज getting rid of distractions and focusing on the paper is very important because it gets you help it helps you get rid of the mental block that is in your mind to solve these questions when you're in the exam, which is very helpful, I think. Okay. And moving on to the mocks का point, because you mentioned कि mocks लेने ज़रूरी हैं, and you also mentioned that you took Krakow mocks. Other than that, Or did you for IIFT? So for IIFT particularly, which mocks did you take other than the Krakow mocks? I didn't take any other because there was only 7 days to IFT preparation, right? So there was Hmm. not a lot of time to take mocks for IFT. So I went through all the past year papers for IFT. Okay. I gave them all as mocks on like on my own timer on the mobile or something, right? Hmm. And then I took the Krakow mocks as well, and that's all the mocks that I took for IFT. But for Almost CAT, कितने number होंगे, कितने mocks uh, होंगे total? I think I gave around like 11 mocks for Okay. IFT. Like I think six past year papers and like five of their. They I think they only offer five Krakow. Correct. Hmm. So I took that. I took those five, and I took six of these previous year papers, which was very helpful to gauge what kind of general knowledge questions are there. Because there's a pattern that you can see that what IFT asks and what IFT likes to ask, right? So Hmm. there's like trade questions, foreign trade questions. There's diplomatic questions. So these are very trendy questions, and you can predict them, and you can predict them for the next year. So I think it helps a lot, and you can also see how the quant questions are framed. So they are very lengthy questions to read. CAT Hmm. usually has like 1 or 2 line questions, but IFT has like these 4 or 5 line questions that until you reach the end of the question, तब तक तुम भूल चुके हो कि पहले क्या हो रहा था. So it Correct. is very important to get into that mindset of IFT, of lengthy questions and these lengthy answers, so that you have the stamina to pursue to the answer. Because बीच में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो अजीब से नंबर आ रहे हैं, like 5.343 आंसर आ रहा है. ठीक है, तो लाइक विच इज वेरी नॉट नॉर्मल फॉर द कैट एग्जाम बिकॉज दे हैव वेरी कैट में Specific. लाइक, हाँ कैट में वो सोच के नंबर देते हैं कि ये कट जाएगा आगे जाके, कि ये Hmm. यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, तो वो दिमाग से खेलते हैं कि लाइक कि तुम वो नंबर के साथ खेल पाके उसको अच्छे से ला पाओगे कि नहीं नंबर में. पर Hmm. आईएफटी वाले ये नहीं करता है. एनटीए डजंट डू दिस. सो एनटीए हैज लाइक दीज जस्ट numbers are there and you have to calculate this. So these Got mensuration questions get really intensive. So they have like पॉइंट में 4 डिजिट में नंबर चला जाता है, तो इट इज वेरी डिमोटिवेटिंग एट दैट पॉइंट व्हेन यू आर सॉल्विंग. और फिर जब लास्ट में तुम आंसर देखते हो या ऑप्शन देखते हो, देन इट्स फाइन कि चलो ठीक है वो अप्रोक्सीमेट आंसर ही पूछ रहे हैं ऐसा. And you were mentioning cat mocks also, so वो भी बता दो कि वो कहाँ से लिए थे. I think for cat mocks, I gave a lot of time mocks. I bought the time mock series. I think it's AimCat. So I Correct. gave Ames. all the AimCats. I gave all the AimCats self-administered also. So Hmm. there are two kinds of AimCats. One is you go on the center and you give the exam for time. Hmm. And there's also self-administered AimCats which you can give them at home. And there's like a ranking for all India ranking and stuff like this. I also tried the Unacademy mocks, but I found a lot of solution issues with them, and there was no way to correct them, so I stopped giving them the academy mocks. And I Hmm. tried fixing them, but no one actually replied from the academy team. I really was disappointed back then. So yeah, I mostly gave the time mocks, and I my friend also had a subscription for SimCats for IMS, Hmm. so I took those as well sometimes because I think the VRC section is very nice to practice for cat. So yeah, that's Okay. what I did. So aim cats and sim And cats. there's this very prominent question जो किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट जानना चाहते होते हैं, that what is your daily routine like when you were preparing for, let's say, the CAT exam. So pre-CAT exam routine, and then after CAT exam for IAFT specifically, what was your preparation routine like? Okay, so I was
doing my job while preparing for CAT as well. So up until December, I never quit my job for the IFT exam. But I did take, like I did shorten my work days for IFT. So I, instead of like 8 or 9 hours, I went to the job for 4 or 5 hours just to keep an eye on things as a facility manager. So my I only usually study at night. I'm not I don't wake up at 6 a.m. and read newspapers, and I'm not like the ideal child that way. I only study at night because there's peace and there's no one to like disturb me, and there's um no distractions at night. So that's when I can study properly. So I used to study from like 10 p.m. to 6 a.m. and then I slept, and then I woke up at 2 p.m. next day, had my lunch, went to work, came back at 6 p.m., then chilled for 4 hours, and then studied for 8 hours or so. So that was basically my daily routine. And I know like people have different, they have like different mindsets for studying. So some people cannot study at night, they like to study in the morning. Some people like to study in the afternoon. So my brother, for example, he can only study in the afternoon. So he Hmm. studies from 12 p.m. to like 6 p.m., right? So for those 6 hours he studies. So it's very different for different people. I think people should study on their own, जो भी whatever उनको makes them कंफर्टेबल है. comfortable, instead of what someone else might say कि नहीं तुम सुबह पढ़ो, तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो तो अच्छा हो जाए. जो तुम्हें अच्छा लग रहा है या जो तुम्हें सूट कर रहा है, आई थिंक वैसे पढ़ना चाहिए. तो विच इज मोर इफेक्टिव. कि कोई बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है पर वो लाइक अच्छे मन से नहीं पढ़ रहा है, या कोई इंसान पढ़ रहा है 4 घंटे मन से पढ़ रहा है, तो आई थिंक इट इज more beneficial to be that 4 घंटा वाला guy. करेक्ट. So, so I think that's an issue with a lot of people. I have seen it in my family as well because I live in a joint family, and there's two of my cousins who are actually giving the CAT this year. And earlier they were like, मैं को सुबह उठूंगा जल्दी और फिर मैं पढ़ूंगा, even though they didn't know like what is the most efficient way to study. So you should firstly find out what's the most efficient way to study and then start studying. लोग बस ऐसे ही बुक उठा के पढ़ने लग जाते हैं without doing any research upon them and searching inside कि मेरे को कब पढ़ना पसंद है, मेरे को कैसे पढ़ना पसंद है, मेरे को बुक से पढ़ना पसंद है या मेरे को वीडियो से पढ़ना पसंद है, या मेरे को पीडीएफ से पढ़ना पसंद है. अब जैसे मेरे से पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती, तो आई प्रिंटेड आउट योर होल फॉर्मूला बुक इन अ स्पाइरल बाइंड एंड देन आई स्टडीड फ्रॉम. So मेक मेरे को सेंस. पीडीएफ से नहीं चलता ऐसा. तो everyone should have their own set of quirks that they like to study with, and I think that is really helpful. And among all these sections, how much time did you devote to each section? So if I studied for 8 hours, I would use uh 5 hours for quants, because I think quants was the most difficult section for me to learn in the beginning, because I quit maths in 10th and in 11th and 12th. So PNC was a huge new topic for me. I spent a lot of time learning PNC and these modern math things like set theory and stuff like this, like coordinate geometry. These were not my subjects in 10th and 9th. So I studied them. I focused on these time works, like these speed and time, speed and distance questions. So I for 5 hours I would study quants. For 2 hours I would study LRD. I would solve those sets that I mentioned from aptitude jabs channel. And then the remaining time I would give to VRC. I would solve the past year VRC questions. And there was also I think a file that I had with like a lot of parajumbles that were there. So I used to solve those parajumbles with my friends. So we would sit down, we would get on a Google Meet, and then we would solve each of them together. And then we would write down all our answers and then see the answers. And whoever has the right answer, they would explain their thought process. कि मैंने ये सोच के ये किया था, ये बाकी सब तो गलत. जो सही था वो बताता था कि मैंने ये सोचा था और इसलिए मेरा आंसर सही है. So we would do all of this. So it made it very fun to do VRC questions. So I would always look forward to those 2 or 3 hours of all the studying time. So it was very fun to study with. I think studying with friends makes it very engaging, and you actually like look forward to studying instead of dreading कि अब मुझे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, something like that. So it made studying very fun. But did you study for 8 hours every day? Usually I would, but मेरे भैया की एंगेजमेंट आ गई थी बीच में अक्टूबर में, तो फॉर दैट 20 or 30 days I didn't study. बट बाकी दिन I would like without fail like I would study, because मेरे पास वैसे ही टाइम कम था and I didn't want to settle anything less than 99.9. So Makes sense. I would ask you now about the paper attempt strategy. तो क्योंकि आईआईएफटी का जो एग्जाम है उसमें ऐसा नहीं होता आई बिलीव कि
पहले ये सेक्शन है, फिर ये सेक्शन है, और हर सेक्शन का टाइम लिमिट रिस्ट्रिक्शन है। आपको 2 घंटा दिया है, 4 सेक्शन है, आप मूव अराउंड कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। सो व्हाट वाज योर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी लाइक? So I think the optimal strategy is to go for the GK section first, because the GK section has 20 questions and it takes you maximum of 10 seconds to solve each question. So that section is over within 5 minutes. So I think that is the section that I attempted first, and it was over in 5 to 10 minutes. And then I went straight to quant. I decided my quant time limit was just 30 minutes. I would give 30 minutes to quant. I would solve all the easy questions just to clear the sectional, and I would go on to LRDI. So that's what I planned for quant. So it was like a round robin, but just for the quant section. So for I would do the easy questions, which were short and easy to do and quick to do. I did all those Got it. questions and moved to LRDI. I gave 30 minutes to LRDI. I went from the mindset that I would do 2 sets, which were the easiest sets that I would do, and I would find the easy sets. And it's very easy to identify in IIFT that which sets are easy. In CAT, it's very difficult because unless you have solved for the 5 minutes at the beginning of the set, you won't know how hard the set is. It's very Hmm. difficult to gauge. But in IFT, it's very easy to gauge which section is easy and which set is easy. Because there's some bar graphs and there's some pie charts. So they like these types of questions, which are very lengthy but very simple to understand and very simple to do. But the calculation is very lengthy. So Hmm. I did those questions and I practiced my calculation using this website that gave you like arithmetic question that you would have to solve quickly. The So like two math seconds. trainer one. Yeah. Something I had like ZetaMacArithmetic.com or something. Got it. So I use that for IFT to train my arithmetic skills to do quickly, because IFT is more about speed and less about how much you can do. So it's more about speed. So after, and I attempted the VRC section last. So and I thought I would solve every VRC question. So there's 35 questions in VRC and I would attempt all of them except the factual ones, right? So if they ask you a meaning of the word and you don't know it, there's no Hmm. sense to attempt it, because accuracy is also really important. So Okay. that's what I did for my attempt strategy. And after I would do the VRC, if I had any time left, I went back to quants for my round two of the quant question, which were uh, I could do, but it would take time. So I did those questions. And after Makes that, my sense. time was. Got it. I think there was an important point highlighted by Diparkya, if I'm not wrong. He's been a regular viewer of the channel also. And I think बहुत सारे लोग जिन्होंने IIFT पहले दिया होगा, उनको भी ये कंसर्न आया होगा. People were saying कि कुछ centers में interface issues आए थे while attempting the paper. Now I haven't taken the exam. If you are aware कि क्या होते हैं ये interface issues, and if somebody faces something like this during the exam, तो उन्हें कैसे prepare करना है अपने आप को mentally to handle that and to come out of that scenario? Yes, so the problem is I did face these interface problems, and everyone at my center, I live in Surat, and I had a center in Surat, and everyone was facing these issues because the software that the NTA conducts IFT on is not very optimized for all display sizes. So there's zoom problems because you can't even see the whole chart in one page, right? So imagine having to Okay. scroll through pie charts and like table charts to gather information, and you just forget the previous information. So Hmm. I think the one way that I dealt with this was I just imagined that everyone has the same problem and everyone is at this disadvantage. So I just considered it a part of the exam, like this is a challenge for the IFT exam, that there will be interface issues and there will be your computer might shut down for like 5 minutes or 10 minutes, because one of my friends um, had this issue. Their computer shut down for 5 minutes, and the invigilator told them that the timer would be stopped, but when they started the computer again, the timer didn't stop, so the 5 minutes were just gone. Hmm. So I think this is just, you have to expect it, and if you expect it, it makes it much easier. Okay. And you have to remember that everyone has this issue, because the scroll issue and the zoom issue, the answer's not being clicked. If I click on the question and the answer the option, I move to Hmm. the next question, and if I come back to that question, it is unselected. So like if I click A on some question, I go to the next question, I have to come back to that question and I see that A has not been clicked. So I have to click all the answers again, and this happens randomly. So even in my LRDA set, I attempted one set that they didn't count the answers for, which was the last set that I attempted. So I marked the 4 questions, but when I
checked the answer sheet, those four questions weren't marked. So I could do nothing about it, because and I lose 12 marks because of it. And it's very frustrating to see, because I did Correct. waste my time doing those questions and doing that set. I think it was the COVID patient set that I did last. And it was very frustrating to see that in the answer key that those weren't marked. And I was sure I did it, because I had my notes that I did this, I did this. So after the exam I would come out, I would write, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये पर किया वो था. हुआ नहीं सिलेक्ट। हाँ, वो हुआ नहीं, वो क्लिक हुआ नहीं था, तो इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू सी. बट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द एग्जाम. सो यू नो अब वो आईएफटी का वो एक क्वर्क है कि तुम इंटरफेस इशू आएगा ही आएगा. तो वो तुम एक्सपेक्ट करके जाओ, और तुम ये सोचो कि सबके साथ हो रहा है ये दिक्कत. At this तो point, देन I feel like there are two messages. One is to NTA कि they should probably try solving this next year. And another message is for all the MBA coaching institutes कि probably they should make mocks with such interface issues so हाँ, that yes, students can practice them. So ट्रू yeah, ट्रू. I have another question for you. This was regarding the profile. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते थे कि अगर उन्हें आईआईएफटी दिल्ली कोलकाता किसी में भी एडमिशन चाहिए, हाउ मच इज योर प्रोफाइल इम्पोर्टेंट, बिकॉज आईआईएम्स के लिए प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है. हाउ मच इज प्रोफाइल इम्पोर्टेंट, एंड इफ यू हैव सम स्पेसिफिक टिप्स फॉर फ्रेशर्स, व्हाट वुड यू सजेस्ट देम? Shweta, I think this profile word is being thrown around a lot, and people are getting roped into doing stuff for profile building that they shouldn't be doing. So I think there are like lot of scams that these institutes are running. Even they give you like, हम तुम्हारा प्रोफाइल बिल्ड कर देंगे तुम्हें. they like, उनको डरा के रखते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा तो होगा नहीं, तुम्हारी तो प्रोफाइल अच्छी नहीं है. फिर उनको एक हफ्ते बाद कॉल करेंगे कि देखो हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग प्रोग्राम है, हम तुम्हें सर्टिफिकेट दिलाएंगे, तुम हमें 10,000 रुपए दो, 15,000 रुपए दो. And all of this is not very healthy for the environment for cat, right? So I think the professors are aware of this, and people are getting these fake certificates and these fake courses that they just complete through in a day or two, and they just think that they are building their profile and it will help them get selected. I don't think all of this is necessary to do this. So I think the professors are smart enough to know what the current market state is and current student mindset is. So मेरे हिसाब से लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग वहां तक ही नेसेसरी है जहां तक तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन है. तो अगर तुम्हें करेक्ट. इन्फॉर्मेशन है भी और तुम्हारे पास उसको दिखाने के लिए कुछ नहीं है, पर तुम इंटरव्यू में उसके बारे में कुछ बोलोगे ना, तो वो क्वेश्चन पूछ ही लेंगे. तो उनको करेक्ट. समझ आ ही जाएगा कि उसको इंटरेस्ट है, भले इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है फाइनेंस का, पर इसको फाइनेंस की नॉलेज है. तो मेरे हिसाब से लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग इज नॉट दैट मच एनी लाइक, आजकल 2023 में इतना नेसेसरी नहीं है प्रोफाइल होना सेलेक्ट होने के लिए कॉलेज में. मैंने आईआईएम अहमदाबाद में लोग जाते हुए देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ कैट का स्कोर था और इंटरव्यू था. उनकी पर्सनालिटी अच्छी थी, उन्होंने इंटरव्यू में अच्छा इंटरव्यू दिया होगा, उन्होंने लाइक दे हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन विद द प्रोफेसर्स इन द इंटरव्यू. और तो मेरे हिसाब से आईएफटी में तो और भी कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वो स्कोर का क्राइटेरिया है. तो आई डोंट थिंक प्रोफाइल का तो कोई भी मार्क्स नहीं है यहाँ पे. तो 10th का करेक्ट. मार्क्स है, 12th का मार्क्स है, जेंडर डाइवर्सिटी का मार्क है, एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी का मार्क्स है. तो दे डोंट आई डोंट थिंक कि शॉर्टलिस्ट के लिए तो प्रोफाइल चाहिए, तो दैट इज कम्प्लीटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन. और इंटरव्यू के टाइम पे तो तुम वैसे भी लाइक, वर्बली बताओगे जो हाँ भी तुम वैसे बताओगे. भी तुम वहाँ पे लाइक जितना तुम्हें खेलना है वहाँ खेल ही सकते हो. तो you can impress them on your personality and your information. You don't have to have the certificates, because I had a lot of certificates, and I did a lot of courses. I did these investment banking course from BCG and Bain. I did from Bank of America. I did investment banking courses, and no one asked me a single question on them, right? And after I raised the point कि मैंने अपने conversation के बीच में वो points डाले, and then they asked some follow up questions which would lead to a good conversation about the economy or something like. So in IFT there was a question कि वो इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशन के बारे में पूछ रहे थे, वो फ्यूचर के. तो आई कुड मेंशन कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने इस कोर्स में ये पढ़ा है कि ट्रेड रिलेशन ऐसे अफेक्ट होते हैं, ट्रेड डिफिसिट है हमारा है चाइना के साथ, हम ट्रेड डेफिसिट ऐसे ठीक करेंगे, या हमारे ये प्लान है गवर्नमेंट के, ये फिस्कल पॉलिसी है, ये मॉनेटरी पॉलिसी है. तो वो तुम बोलोगे तो उनको समझ आ जाएगा कि इसको पता है. तुम वो वहां सर्टिफिकेट दे कॉन्वर्जेशन. करेक्ट, वो एग्जैक्टली कॉन्वर्जेशन से गेज कर कॉन्वर्सेशन देते से हैं. दिख जाए. एंड आई हैव तो बीन सेइंग दिस, बहुत सारे लोग ना एक क्वेश्चन पूछते हैं चैनल पे, कि क्या हमें अपना वर्क एक्सपीरियंस फेक दिखा देना चाहिए कि अगर फैमिली बिजनेस है ये वो. एंड आई कीप टेलिंग देम कि अगर आप फेक दिखाओगे एंड इन द इंटरव्यू दे आस्क यू समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर इट, इट विल इट्स बैकफायर सिंपल. लाइक क्रेजी.
बिकॉज वो खत्म। प्रोफेसर्स बहुत स्मार्ट हैं, लाइक दे विल फिगर आउट इन अ सेकंड दैट यू आर लाइंग अबाउट इट, सो और अगर उन्होंने नहीं भी पूछा और तुमने खुद मेंशन नहीं किया ना कुछ, या तुमने किसी कॉन्वर्सेशन में लेना, तो उनको समझ आ जाएगा कि उस बंदे के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। करेक्ट, यू नो आई मेक सेंस, मैंने हर कॉन्वर्सेशन में मैंने जानबूझ के डाला ये क्योंकि यू इन्वेस्टमेंट। न्यू अबाउट इट। मैंने फाइनेंस वाला जबरदस्ती वो पॉइंट कहीं ना कहीं से ढूंढ के वो कॉन्वर्सेशन में मैंने डाला कि ताकि वो उस पर क्वेश्चन पूछे, या फिर उनको एटलीस्ट रियलाइज हो कि इसने जो ये बोल रहा है वो एक्चुअल में वो सुन रहे हैं। तुम जो भी वर्ड बोल रहे हो वो सुन रहे हैं, भले तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है हर एक वर्ड, पर वो हर एक वर्ड ध्यान से सुन रहे हैं। तो जो गॉट जो भी तुम बोल रहे हो ना, वो ये सोच रहे हैं कि ये बंदा सोच के बोल रहा है, और ये जानबूझ के बोल रहा है जो भी बोल रहा है। तो एवरी वर्ड यू से एंड एवरीथिंग यू ऐड टू द कॉन्वर्सेशन मैटर्स। सो जब तक तुम कॉन्वर्सेशन में नहीं ला रहे, या फिर वो तुम्हें सामने से नहीं पूछ रहे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। वो बस मेक्स। तुम्हारे ऐसे लिंक्डइन पे वो सर्टिफिकेट दे, बट लाइक देयर इज नथिंग एल्स दैट प्रोवाइड्स वैल्यू टू योर एप्लीकेशन if you're not actually you know don't have the knowledge to back it up. Nitish, I have one more question, and while I'll ask this question, I'll also go through the chat box. So, Sure. अगर किसी का भी कोई भी question है, this is the time to put it in the chat box so that I can ask it to Nitish. Nitish, the question that I'll ask you meanwhile is कि do you have any tips for people who will be targeting IIFT exam, either for preparation or for interviews? And if you also want to add some tips for in general MBA preparation journey, like the other exams also, feel free to do so as well. So any tips for the MBA aspirants basically? I think finding the best way to study is more important than starting studying, and finding what works for you is very important. I think it's the most important thing that you can do, because if you study for 2 months, like like in a less effective manner, then it's all gone to waste, because you won't remember any of it, or you will not have that much expertise that you would have on that topic, right? So restudying topics is very difficult, because once you've learned something, it's very hard to unlearn it and then relearn something again. So finding something to learn again, which is always a good thing, on the first try. So you should always focus on learning the best way on the first try when you're learning a topic. I think it's very important, because मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने पीएनसी लाइक गलत तरीके से पढ़ लिया था कहीं से, और फिर मेरे को वापस सारा पीएनसी भूल के फिर अच्छे से पढ़ना पड़ा था, किसी और टीचर से और किसी और बुक से और किसी और मेथड से। तो उसमें मेरा लाइक 1 महीना वेस्ट हो गया था लास्ट का, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मेरे को पीएनसी आना चाहिए, बिकॉज आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन पीएनसी, बिकॉज मेरे को टॉपिक अच्छा लगता है। और क्योंकि लाइक एनमैट और आईएफटी में क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न मैथ के भर भर के। आईएफटी में 6 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न मैथ के इस बार, एंड इट हैज द हाईएस्ट वेटेड ऑफ मॉडर्न मैथ इन एनी ऑफ द एग्जाम्स। सो जेड में भी नहीं आता इतना मॉडर्न मैथ, एनमैट में भी नहीं आता, कैट में भी नहीं आता, सिर्फ आईएफटी में इतना मॉडर्न मैथ आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस पीएनसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टफ लाइक दिस फॉर आईएफटी एग्जाम। और इसको ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। तुमने कहीं से पढ़ लिया, तुमने फॉर्मूला रट लिए, it won't help you in the exam, because these are very thought बेस्ड क्वेश्चंस, कि तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि उसके सॉल्व करने के हजारों तरीके होंगे, पर जो बेस्ट तरीका होगा वो तुम्हें कम से कम भी 3 मिनट 4 मिनट बचा रहा होगा। और तुम जो मेथड से सॉल्व करोगे उससे 5 मिनट लग रहे होंगे, जो बेस्ट तरीका है उससे 2 या 1.5 मिनट लग रहा होगा। तो दैट एज गिव्स यू सो मच एक्स्ट्रा परसेंटाइल, तुम्हें 10-15 परसेंटाइल उस एज से एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारा सीधा 80% से 95, तो तुम सिर्फ एफिशिएंसी के बेसिस पे आ सकते हो। एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, अगर तुम एफिशिएंटली अगर एक सब्जेक्ट पढ़ो और तुम एक्चुअल में रियलाइज करो कि वो सब्जेक्ट क्या है, और लाइक तुम उस पर एक्चुअल में रिसर्च और इंटरेस्ट होके पढ़ो, कि यार इंटरेस्टेड होके पढ़ो कि मेरे को एक्चुअल में सीखना है, और मेरे को एक्चुअल में लाइक मजा आ रहा है टॉपिक पढ़ने में। तो आई थिंक इट इज वेरी एंगेजिंग एंड इट इज वेरी फ्रूटफुल, एंड इट हेल्प्स यू गेट अ गुड परसेंटाइल अलॉट। लाइक 80 से 95 तो बहुत आसान है, अगर तुम इस चीज पे फोकस करो कि मैं जो भी पढ़ूंगा एकदम अच्छे से पढ़ूंगा, और तुम सिर्फ टॉपिक्स के पीछे मत भागो, अच्छा मेरा टीएसडी हो गया, मेरा टाइम एंड वर्क हो गया। पर टाइम एंड वर्क का अगर कोई क्वेश्चन देगा तो फिर नहीं होता है। तो इट इज वेरी काउंटर प्रोडक्टिव कि तुमने सारे टॉपिक कर लिए बट क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे। तो आई थिंक कि वो एक एक टॉपिक को पकड़ो और उसको अच्छे से करो, उसको अच्छे से पढ़ो, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, ताकि उस टॉपिक का कोई भी तुम से कुछ पूछे तो तुम्हें आना चाहिए। अभी मैं वो रैपिड फायर क्यों नहीं करने वाली हूँ, जो भी क्वेश्चंस हैं। कैन यू गिव मी 1 सेकंड, मेरा 3% बैटरी है, मैं एक बार चार्जिंग में लगा देता हूँ श्योर प्लीज। श्योर श्योर, मीनवाइल मैं चेक कर लेती हूँ, अगर कुछ और भी पूछना है तो पूछ लो गाइस।
एंड आईआईएफटी के स्पेसिफिक, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है आई थिंक मोस्टली इंटर्नशिप्स प्रोफाइल बिल्डिंग के अराउंड है, तो अगर आईआईएफटी के रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ देना। और वीडियो के बाद मेरे को एक फीडबैक भी जरूर देना कि हाउ आर यू लाइकिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, बिकॉज फिर हम और लाइव सेशंस करेंगे और लोगों को बुलाएंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में गए, जो अलग अलग कॉलेजेस में गए। Okay. Yeah. So I'll ask those rapid fire questions. सारे questions को if you can answer in like less than a minute or so, so that हम cover कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा questions, ठीक है? Firstly, how important are internships? ये polemy का question है. How important are internships for getting into IIFT or any of the MBA colleges? इंटर्नशिप्स आर रियली इंपॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि उसमें तुम्हें एक्चुअल में रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल रहा है, और तुम एक्चुअल में उस टॉपिक पे बात कर पाओगे अगर तुमने इंटर्नशिप की है। Hmm. तुमने कोई भी इंटर्नशिप की, तुम एक्चुअल में उस टॉपिक पे बात कर पाओगे, तुम एक्चुअल में कन्वर्सेशन कर पाओगे, तुम उनको बताओगे कि मैंने ये इंटर्नशिप की। और स्पेशली अगर तुम कहीं बिग ब्रांड लाइक जगह पे इंटर्नशिप करते हो, तुमने माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या कहीं इंटर्नशिप की, तो वो आई कैचिंग पॉइंट है उनके लिए, और वो उस पर चाहेंगे कि वो बात करें, क्योंकि वो ठीक है, चाहते हैं कि तुमने वो जानना कि तुमने क्या सीखा है। तो आई थिंक इट इज वेरी makes इंपॉर्टेंट, इंटर्नशिप इज सुपर। करंट अफेयर्स का कितना प्रपोर्शन है इन द जीके सेक्शन? यू मेंशन काफी सारे रिसोर्सेज, वो मोस्टली काफी सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो मोस्टली स्टैटिक क्वेश्चंस थे, लेकिन जो करंट अफेयर्स हैं जो उस पर्टिकुलर ईयर में हुआ होगा, वो कितना आता है इन जीके? I think it's 50-50. The current affair is 50 and the static is 50. But it's, in my opinion, it's very easy to prepare for the static ones because वो वो बकेट फिक्स है कि वो उसी में से करेक्ट। आएगा। तो क्योंकि हम्म। करेंसी 200 ही करेंसी है दुनिया में, उससे ज्यादा तो है नहीं, तो तुम 200 कर लोगे तो तुम्हारे 1 मार्क तो पक्का हो गया ऐसा, और तुम लाइक हम्म। 2-4 दिन कर सकते हो। तो स्टैटिक के लिए पढ़ना आसान है, पर वेटेज दोनों का आई थिंक सेम है। ठीक है। और स्पीड और एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव की जाए इन दी आईआईएफटी एग्जाम स्पेसिफिकली? स्पीड तो मैम आई थिंक कि वो मॉक देने से ही आती है, या क्वेश्चन सॉल्व करने से। देयर इज नो इजी वे अराउंड इट कि मैं ऐसे बोल दूं कि नहीं वो तुम 10 क्वेश्चन कर लो आ जाएगी, वो नहीं आएगी। तुम्हें क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, तुम्हें मॉक देना ही पड़ेगा, और तुम्हें लाइक एक्चुअल में अटेंटिव होके तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, तो ही एक्यूरेसी आती है। वरना इट्स इम्पॉसिबल टू, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी एक्सेप्ट प्रैक्टिस। गॉट इट। वैष्णव का क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन के टाइम बहुत लो फील होता है, सो हाउ टू कीप योरसेल्फ एनर्जेटिक थ्रू आउट? आई थिंक वन थिंग यू मेंशन्ड इज कि फ्रेंड्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। मैं वही बोलने वाला था अभी कि फाइंड सम लाइक स्टडी पीपल और स्टडी बडीज दैट यू कैन स्टडी विथ। आई एक्चुअली मेड एन एफर्ट टू गो लाइक ऑन टू पागल गाय। आई पोस्टेड अ पोस्ट ऑन pagalguy.com कि मेरे को कोई इफ एनी वांट्स टू प्रिपेयर फॉर कैट। आई हैड सम टेलीग्राम ग्रुप्स दैट आई वाज एक्टिव इन, लाइक सम पर्सनल ग्रुप्स 40-50 लोगों के, जहाँ पे हम लोग डाउट पूछते थे या बात करते थे। अच्छा, और फिर सब हम लोग इकट्ठा होकर मॉक्स लिखते थे। हम लोग हम्म। आपस में डिसाइड करते थे कि अच्छा आज सिमकैट 11 लिखेंगे, और फिर सब लोग 9 बजे बैठ के सिमकैट 11 लिखते थे, और फिर 11 बजे डिस्कस करते थे सिमकैट 11। तो ऐसे आई थिंक इट मेक्स द प्रिपरेशन मोर फन, कि तुम बोर नहीं हो रहे। और बहुत बार ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे दोस्त के साथ पढ़ रहे हो, तो तुम अगर मूवी देख रहे हो तो तुम्हारे ऐसे दिमाग में रहता नहीं यार वो तो पढ़ रहा है, वो मैं पर मूवी देख रहा हूँ। तो सही अगर जब है। सब लोग साथ में डिसाइड करते हैं ना कि 9 से 11 मॉक लिखेंगे, तो तुम मॉक लिखते समय तुम्हारे मन में ऐसा नहीं रहता कि अच्छा वो तो पढ़ रहा है मैं मॉक लिख रहा हूँ। तो तुम्हें पता है कि सब मॉक लिख रहे हैं, तो मिक्स। इसीलिए वो दिमाग में ऐसे चिल रहता है कि चलो मॉक लिखते हैं। अगर क्योंकि अगर मैं मॉक लिख रहा हूँ, मेरा दोस्त पढ़ रहा है ना, तो मुझे ऐसा बहुत अजीब लगेगा कि यार वो तो पढ़ रहा है, मैं मॉक लिख रहा हूँ बेवकूफ जैसे। तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग ऐसा सोचे, तो वो सब लोग तुम साथ में मॉक लिखो, तो सब लोग को साथ में ऐसा लगेगा नहीं कि कोई पढ़ रहा है। और फिर तुम बाद में डिस्कस करो, या कोई तुम टॉपिक एक दूसरे को अच्छा आता है, जैसे कि मेरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा था और मेरे दोस्त का नहीं था, तो आई वुड टीच हिम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब उसका पीएनसी अच्छा था या उसका कोई ज्योमेट्री अच्छा है, तो वो मुझे ज्योमेट्री पढ़ा दे, तो ऐसे लाइक इवन वो चलता। एमबीए कॉलेजेस में भी यही होता है, इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस अभी से। हार्दिक का क्वेश्चन है, हार्दिक इज अ रेगुलर व्यूअर ऑफ द चैनल। हार्दिक का क्वेश्चन है कि हाउ डू वी स्टे काम जब एक सेक्शन अच्छा नहीं होता है? दिस माइट बी इन रेफरेंस टू द कैट एग्जाम, बट इवन इन आईएफटी मान लो मैंने एक सेक्शन उठाया एंड वो टफ लग रहा है, तो देन हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स मेंटली? तो मेरे साथ ये होता था स्टार्टिंग में, जब मैं टाइम के मॉक्स लिखता था, तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि यार नो, आई वुड एक्सपेक्ट अ सर्टेन परसेंटाइल कि मैं मॉक लिख रहा हूँ तो मेरी इतनी परसेंटाइल आनी चाहिए, इतनी आएगी। और उस बीच में मॉक के मैं सोच रहा हूँ कि यार एलआरडीए में एक भी सेट नहीं बना,
ऐसा होता है कि 4 सेट आए, चारों में से एक भी नहीं बना, तुमने 40 मिनट वेस्ट कर दिए। अब तुम्हारा क्वांट में तो ध्यान लगेगा ही नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने एलआरडीआई तो पहले ही डुबा दिया है। और फिर तुम बाद में जाके देखते हो, जब ऑल इंडिया की रैंक की लिस्ट निकलती है, कि किसी ने ही नहीं किया। हम्म। तब तुम्हें ऐसा अच्छा फील होता है कि हाँ यार, वो मेरे को मुश्किल लग रहा था तो पूरी दुनिया को मुश्किल लग रहा था। तो क्योंकि, और ये परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम है, परसेंटेज बेस्ड एग्जाम नहीं है, तो तुम्हें हम्म। लोगों से आगे रहना है, किसी से ही नहीं हो रहा। और मेरे से भी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम, अगर तुम्हें कोई सेक्शन हार्ड लग रहा है, बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे से सिर्फ 22 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनते थे क्वांट में। और फिर मैं जाके देखता होता हूँ लीडर बोर्ड में, तो मेरी ऐसे क्वांट की परसेंटाइल 95 होती है, क्योंकि बाकी सबसे दो ही बने थे 22 में से। तो आई थिंक तुम्हें अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि यार, अगर मेरे को हार्ड लग रहा है और मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ कैवियट, कि तुमने अच्छे से पढ़ाई की होनी चाहिए। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो मुश्किल है, तो वो तो सबके लिए ही एक्चुअली मुश्किल है। मुश्किल होगा। वो कोई मेक नहीं कर सेंस। रहा फिर ऐसा। मेक सेंस। एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग, आई एम नॉट श्योर ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, बट हो सकता है कि आईआईएफटी, इज दैट सो कि आईआईएफटी ज्यादा उनको प्रेफर करता है जिनके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो या सोशल वर्क जिन्होंने ज्यादा किया हो, ऐसा कुछ है क्या? No, I don't think so. I don't think, and ओके। I've not heard of this anywhere. I have been in contact with some IFT alumni हम्म। and IFT people who are studying in IFT, and I have not heard any of this. So ठीक है। एक क्वेश्चन है कि अगर किसी के लेट्स से सेक्शनल कट ऑफ लो परसेंटाइल पे क्रॉस हो गया है सेक्शनल, लेकिन ओवरऑल अच्छा आ गया है, तो कितना चांसेस रहता है जस्ट बिकॉज एक सेक्शन में जस्ट बॉर्डर लाइन क्रॉस हुआ है, उसका कुछ इम्पैक्ट होता है क्या? कोई इम्पैक्ट नहीं होता जब तक आपको शॉर्टलिस्ट आ रहा है, और जब तक आप वो 40 परसेंटाइल वाले मार्क्स से ऊपर हो, तब तक हम्म। कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक, अगर तुम्हारा फाइनल परसेंटाइल बहुत अच्छा है, हम्म। और क्योंकि जो सेकेंड राउंड है, जो इंटरव्यू वाला राउंड है, उसमें आईएफटी का स्कोर देखा जाता है। हम्म। आईएफटी का स्कोर तो तुम्हारा हाई होगा, क्योंकि तुम्हारा परसेंटाइल अच्छा आया है। तो इट डजेंट मैटर कि तुमने सेक्शनल, लाइक, 10 मार्क्स से पास किया या 1 मार्क्स से पास किया, तुमने सेक्शनल क्लियर कर लिया, इट्स ओवर। कि अगर तुम्हारे जीके में 6 आए, जो तुम्हारे 15 आए, वो सिर्फ मार्क्स का डिफरेंस है। बाकी थियोरेटिकली इट्स द सेम, कि भाई तुमने सेक्शनल क्लियर है, दैट्स व्हेन यू गेट अ कॉल। तो मेक कॉल उस सेंस। पे बेसिस है। बाकी जो सिलेक्शन है वो आईएफटी के स्कोर पे है, तो उस पे सेक्शन का कोई रिलेशन नहीं। इंटरव्यू राउंड में तीन प्रोसेसेस होते हैं ना, वैट, जीडी और पीआई, करेक्ट ना? Yes. It was supposed to be like that this year as well, but they changed it at the last moment. So they made it just PI and extempore. तो उन्होंने ओके। वॉट और जीटी कैंसिल कर दिया। नॉर्मली इट इज ऑफलाइन एट देयर सेंटर इन आईएफटी। हम्म। यहाँ इस बार भी ऑप्शन उन्होंने दिया था ऑनलाइन और ऑफलाइन का, कि जिसको हम्म। ऑनलाइन देना है वो ऑनलाइन दे सकता है, जिसको ऑफलाइन देना है वो ऑफलाइन दे सकता है। और एवरीवन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जीडी एंड वॉट एज वेल। बट उनका लास्ट मोमेंट पे ऐसा नोटिस आया उनकी कम्युनिकेशन टीम से कि हमने वॉट और जीडी कैंसिल कर दिया है, तो इट विल ओनली बी पीआई एंड एक्सटेम्पोर। और एक्सटेम्पोर वो पीआई के स्टार्टिंग में ही तुम्हें लाइक टॉपिक दे देते हैं और तुम्हें बोलना होता सो somebody has asked your experience कि कैसा था? है इन द एफटी इंटरव्यू। ओके। Yeah. तो आई थिंक माई टॉपिक वाज, आई थिंक इट वाज समथिंग अबाउट द स्टडी। अभी रिजल्ट्स आए नहीं है आईएफटी के। आई if they're watching this मेरे session they'll पास, be like they'll मैंने be like लिख के याद नोट्स, कैसे नहीं है? पर वो आई थिंक इट वाज समथिंग अबाउट एजुकेशन पॉलिसी लाइक ऑफ इंडिया, कि वो कैसी है और ऐसे। तो फिर आई सेड सम पॉइंट्स अबाउट द एनईपी 2020 एंड स्टफ लाइक दिस। और हम्म। बाकी इंटरव्यू वाज वेरी चिल। दे आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ लाइक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, कि भाई इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशंस कैसे होंगे फ्यूचर में। अभी वॉर हुई थी तो उस पर इंडिया का क्या इम्पैक्ट है। इंडिया सबसे ज्यादा क्या ट्रेड करता था रशिया के साथ, अब वो कितना हो गया है, हमारा किसके साथ ट्रेड डेफिसिट कितना है। और फिर लाइक मेरे बैकग्राउंड के बारे में और फैमिली के बारे में, और या दैट्स व्हाट्स अबाउट। और फिर उन्होंने लाइक रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, क्योंकि आई डिड वर्क इन अ रेस्टोरेंट एंड आई वाज अ शेफ। तो उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे रेस्टोरेंट्स के ऊपर, अबाउट फुटफॉल एंड दिस, हाउ टू मेक श्योर कि तुम्हारा रेस्टोरेंट आगे चलता कैसे रहे, या फिर रेस्टोरेंट कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस on my profile were very, I think, very nice, and I loved the questions and I answered them very well. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड आई Sure. होप दैट ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करे, बिकॉज प्रिपरेशन के समय जिनके एकेडमिक मार्क्स अच्छे नहीं रहे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है थ्रू आउट प्रिपरेशन। प्रिपेयर करते हुए भी ये डर लगता है कि हो भी जाएगा तो भी शायद शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे चाहे कैट में आईआईएफटी में, तो भी शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी। व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर देम सो दैट दे कैन प्रिपेयर विदाउट दिस वरी?
ओके, सो आई हैड दिस सेम प्रॉब्लम बिकॉज मेरे 10th में 9.4 सीजीपीए था, मेरे 12th में 72% था, और मेरा कॉलेज में ग्रेजुएशन में 78% था। ठीक है, तो बट द थिंग इज, मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई थी कि मैं इसको बदल तो सकता नहीं, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एमबीए करूंगा। नेवर डिड आई प्लान टू डू एन एमबीए, और मेरे को पता नहीं था कि 10th और 12th में के मार्क्स मैटर करते हैं और ऐसा, तो वरना मैं उस टाइम पे पढ़ लेता। पर उस समय मैंने सोचा कि यार उन्होंने 10th में भी झूठ बोला था मेरे पापा ने कि नीतीश मार्क्स मैटर करते हैं, पर हम तो नहीं करते, तो मैंने 12th में नहीं पढ़ा ये सोच के कि मेरे से तो झूठ बोला जा रहा है। तो अब जब मैं पढ़ रहा था, तो अब उस समय ऐसा है कि मेरे को पता है कि मैं चेंज तो नहीं कर सकता अपने मार्क्स, कि मैं वो 9.4 ही रहेंगे और 72 रहेंगे। तो अभी जो मैं फैक्टर इफेक्ट कर सकता हूँ वो है कैट का स्कोर। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई कैन चेंज, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट विल गेट मी इनटू वट एवर शॉर्ट लिस्ट इज पॉसिबल। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे शॉर्ट लिस्ट आता है लो मार्क्स पे भी, पर अगर तुम कैट का परसेंटाइल ही नहीं लाओगे, वो तो फिर वहां से भी नहीं आएगा ना। बात ये तो, इट इज ऑल्सो ऑलवेज अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर चांस, कि अब तुम्हारे साथ जो हो चुका है, तुम्हारे साथ जो पास्ट है, वो तो तुम चेंज नहीं कर सकते, पर तुम कैट का स्कोर तो इफेक्ट कर सकते हो। तुम कैट के लिए पढ़ के उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ताकि तुम्हें एक्चुअल में शॉर्टलिस्ट आ जाए, जिस भले किसी के 90 आए होंगे, पर उसके अगर तुमसे एक परसेंटाइल कम है तो उसको नहीं आएगा और तुमको आ जाएगा। तो जब तक तुम्हारा, और क्योंकि सब लोग कैट को सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं, ये चीज अप्लाइज टू ऑल द कॉलेजेस कि कैट का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज दे नो कि अगर तुम भले ही पास्ट में अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और अब तुम अगर मेहनत करके तुम 99 ला रहे हो तो तुम वर्थ हो। तो दे गिव द मोस्ट वेटेज टू कैट, वो ये सोच के देते हैं, वरना वो इक्वल वेटेज देते हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन को, और अब तो उन्होंने ग्रेजुएशन के मार्क्स बढ़ा दिए बहुत सारे कॉलेजेस ने करेक्ट वेटेज। करेक्ट। तो दे रियलाइज कि यार तुमने भले ही पास्ट में तुमने नहीं अच्छा पढ़ा होगा या कोई रीजन होगा तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं है, पर अगर तुम अब मेहनत करके 99 ला रहे हो तो यू आर एलिजिबल टू कम इनटू आवर कॉलेज, और वी आर रेडी टू एक्सेप्ट यू। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा, पर अब तुम अभी भी शो नहीं कर रहे कि तुम्हें पढ़ के तुम्हें मार्क्स लाने, तो देन दे डोंट वांट यू। दैट्स द प्रॉब्लम। वो बस प्रूफ चाहते हैं कि तुम अभी डिलीजेंटली पढ़ के ला सकते हो कि नहीं, तुम पहले नहीं ले आए वो हमको कोई मतलब नहीं तो मतलब एग्जाम में ले आओ एंड देन इंटरव्यू स्टेज में उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स है। ऑल अबाउट योर नहीं, मतलब परफॉर्मेंस। इट्स लिटरली लाइक 2% का फर्क है हम्म। वहां पे 10th और 12th। वो बस एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाएगा तुम्हें इंटरव्यू में कि तुम्हारे 10th 12th के मार्क्स कितने होंगे। क्यों थे। और मेरे को ना किसी ने नहीं पूछा, मैंने कम से कम भी 15 इंटरव्यू दिए, एक बंदे ने भी नहीं पूछा कि तुम्हारे नीतीश 10th या 12th, क्योंकि मैं तो बात ही कुछ और कर रहा था उनसे, क्योंकि उनको कभी मौका ही नहीं मिला वो उस पे आने का। तो हम्म। हैव टू ड्राइव द इंटरव्यू ऐसी जगह पे जहाँ पे वो क्वेश्चन अफेक्ट ही ना करे, या फिर यू हैव टू प्रिपेयर इनफ कि तुम क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। तो आई थिंक द एडवाइस हियर इज टू जस्ट फोकस ऑन द कैट स्कोर, कि तुम अभी उनको प्रूव कर दो कि नाउ आई एम वर्दी एंड आई एम विलिंग टू स्टडी फॉर द एग्जाम एंड स्कोर, कि मैंने भले पहले नहीं पढ़ा होगा, या मेरे साथ पहले कुछ हो गया होगा, मेरा ब्रेकअप हो गया होगा 10th में, तो मेरा दुख में चला गया था या कुछ भी हो गया होगा, बट अब तो तुम पढ़ के वहां पे उनको प्रूव कर दो कि नहीं यार, अब तो मेरे में कैपेबिलिटी है। ऑल दे वांट इज दिस। इसलिए वो कैट को सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं, और ये चीज हर एग्जाम में अप्लाई होती है आई थिंक। Makes sense. So now I have four things to say, अच्छा। and I'll start off with them. First thing is कि guys, I'll put after this session, I'll put timestamps, Nitish का LinkedIn का ID, as well as the summary of the session in the pinned comment, so that अगर किसी को भी इसके बाद दोबारा रेफर करना हो to the resources that Nitish recommended, तो आप वहां से चेक कर सकते हो. In fact, I think Vaibhav is also asking कि best online coaching कौन सी है IIFT की. So Nitish has answered these questions and has shared so many resources जो कि pinned comment में आपको मिल जाएंगे after this video. Second is कि after this session if you can leave a small feedback in the comments कि आपको ये session कैसा लगा, that will help both of us and will also help me invite more people to the channel. Third is I would request all of you to wish Nitish all the best because his IIFT results are due. So अगर आप सब all the best लिख सकते हो chat box पे, it will really mean a lot to him. And Yes. finally, I would really like to thank you, Nitish, for coming on board and for sharing such great, great insights. I'm sure they'll help everyone on the channel. थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प पीपल। अगर एक बंदे का भी इससे फायदा हो गया और एक बंदे का भी सिलेक्शन हो गया ना आईएफटी में इस वीडियो की वजह से, तो लाइक माय पर्पस हियर इज फुलफिल्ड, यू नो। तो थैंक यू It सो मच फॉर means a प्रोवाइडिंग। lot you coming on board. It has inspired me to, in fact, bring more people onto the channel. Thank you so much for doing this. थैंक यू। Thanks, guys.